ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपददन्तं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोत्तम गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनं मनोहरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं संन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात जगत वरण्य महामंत्र प्रचार एवं श्रीमन महाप्रभु नाम संकीर्तन की अवतार नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव मंडली, ब्राह्मण मंडली, पंडित समुदाय एवं हरि कथा पिपासु सत्री मंडली एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। जय हो जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम दिवस है। हम लोग कलश यात्रा करते हुए भक्तों के गृह में भी गए और समस्त कॉलोनियों में भक्तवृंद के भी आमंत्रण भी दिया। 7 दिन जावत भागवत कथा की सत्र यहाँ पर होगी। इस कथा में सभी लोग श्रद्धा के साथ भाग लें, क्योंकि यह भागवत
because साक्षात भगवत स्वरूप ही this Srimad Bhagavatam is the actual embodiment of the Supreme Personality of Godhead. अंत होने के पश्चात At the end of Dwapara Yuga, Krishna himself, परिकरों के साथ with his associates, नित्य धाम में पधारे। he went to the his तब से eternal ही abode. कलियुग प्रारंभ That's when Kali Yuga started. कली के शब्द ही होता है कलह Kali means लाति इति कलह कलह लाति इति कली Kali कली means युग की कहा जाता है विबोधमान युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? is known as Vivadhan. विबोधमान Vivadhan Vivada means argument, कलह देश, quarrel, ईर्ष्या, hypocrisy, duplicity, envy, भी कहा जाता है। jealousy. This is called Kali Yuga. कली कलहन यही रहता है। आलस्य देश Laziness and hatred दूसरे के प्रति आरोप करना and imposing faults on others, इस कली की unjustified faults. ऐसे कलियुग की लोगों की दुर्दशा दुख This is the स्वयं misfortune of Kali Yuga. The Supreme Personality of Godhead was very द्वापर युग की तो मैंने सारी upset in this yuga. अनेक असुरों को मैं संहार I killed many demons, Krishna says, और भक्त जन को मैं भी कृपा and I showed mercy to the devotees. But धराधाम को छोड़ करके I left my नित्य गुरु धाम when I left this world, mortal world, and returned to my spiritual abode, seeing the people's enviness and jealousy and greed increasing, then the Lord thought, इस कलियुग के लोगों को कैसे उद्धार how can I liberate the living entities of this material world? अपने स्वरूप Because the Lord, He took this form of the Srimad Bhagavatam भागवत के प्रकट कराया। and manifest. Clap loudly. इसलिए श्रीमद् भागवत की This Srimad Bhagavatam is called the direct manifestation of the Supreme Personality of Godhead in the form of Shabda Brahma. भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में ही जगत में प्रकट The Supreme Lord manifest in this form of Shabda Brahma. इस भागवत की कथा कोई श्रवण करे One who listens to this Srimad Bhagavatam वो अति सहज रूप में very easily, संसार को पार करके they can cross over this ocean of material existence and enter the eternal abode of the Lord, the spiritual world. श्रीमद् भागवत So, पूर्ण Srimad रूप में कहा जाता Bhagavatam है is in its complete form is known. सात्विक अवतार कहा जाता है। It's क्या called अवतार? Sattvic, सात्विक Sabda from the नाम word ब्रह्म words, के रूप में ही and Nam Brahma. इस कली युग में केवल नाम आधारा So सुमेरु Kali सुमेरु Yuga, नर ही in only उतर ही पारा। by taking the shelter of the holy names of the Lord, Tulsidas is saying in Ramcharitmanas, कली युग में he has और भी written, in Kali Yuga, there is आश्रय करना नहीं। no need to take shelter of any other thing, नाम आधार but only the holy names of the Lord. सुमेरु नर उतर ही पारा। Vipara. दुर्लंघ वस्तु के भी Even that which is very difficult to overcome भागवत कथा can easily overcome by just listening to the Srimad Bhagavatam's recital over 7 इस days. श्रीमद् भागवतम This Srimad Bhagavatam, 12 canto, made of 12 cantos. ये द्वादश स्कंद युक्त श्रीमद् भागवतम साक्षात These भगवान की 12 cantos are the 12 limbs of the Lord. जैसा हमारी शरीर है और शरीर हमारे शरीर के अंग कौन सा है? But the limbs of our body, the hand is a limb of the body. अंगी The possess the body is called Angi, and the hand, touch, speech are called the limbs of the body.
साक्षात The Srimad Bhagavatam स्वरूपी है। is the direct manifestation of the Supreme Personality of Godhead. द्वादश स्कंद श्रीमद् The भागवतम 12 cantos of the साक्षात Srimad भगवान के Bhagavatam द्वादश are the respectively अंग बताए। the 12 limbs of the Supreme Personality of Godhead. In the Padma Puran, this evidence has been given. पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्जौ कथितौ जातपुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजंतरं दुर्जुगलं तथान्नौ कंठस्तु राजनमो जदिय मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपितु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमारवर्णं सुहितावतारम् अपार समुद्रसेतु अपारं संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपं तमादिदेवं करुणानिधानं तमावर्णं श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपम्। पद्म पुराण In the Padma Puran, this evidence has been given. इस श्रीमद् भागवत This Srimad Bhagavatam, 12 cantos, कहा जाता है is are known as from first and the second are the 2 feet of the Lord. चरण कमल। तृतीय स्कंद The और third चतुर्थ स्कंद and fourth canto स्वयं भगवान के are दो known as गुरु कहा जाता the 2 thighs of the Lord. चतुर्थ And Pancham, पंचम Sham, स्कंद the 5th and स्वयं 6th, भगवान की or the 5th नाभि देश कहा जाता है। canto is the navel of the Lord. नाभि देश। षष्ठ स्कंद The सप्तम 6th स्कंद and भगवान के 7th दो canto are the Lord's two arms of the Lord. अष्टम स्कंद The 8th श्रीमद् canto भागवतम भगवान is known as his chest, और नवम and स्कंद the 9th श्रीमद् canto भागवतम भगवान की is known as the throat of the Supreme Lord. और दसम And the स्कंद 10th canto is the beautiful, मंद मुस्कान के laughing, smiling face ये of मुखारविंदम का। the Supreme Lord. और And एकादश स्कंद the 11th canto भगवान की is known as the Lord's forehead. और द्वादश स्कंद And the श्रीमद् 12th भागवतम canto भगवान की is the top of his head. इसी प्रकार स्वयं In भगवान this way, Kali Yuga, भागवत रूपी he came in the सूर्य के रूप में form, it's the embodied sun, सूर्य उदित होकर के like the तमो sun अंधकार के rises, जैसे the darkness is destroyed. उसी प्रकार भागवत रूपी सूर्य In this जीवों के sun of the हृदय Srimad में Bhagavatam, आके अज्ञान all that darkness of ignorance in the heart of the living entities is destroyed. इसलिए बार-बार इस Again, भागवत And again, श्रवण कीर्तन by listening to स्मरण this Srimad Bhagavatam, listening and hearing, remembering, कीर्तन and और smaran. बार-बार श्रवण करो एक बार नहीं Not ऐसे once. एक बार सुन लेती हो जाए Some say you can just listen once, it's enough. No, again and again, बार-बार इस श्रीमद् भागवत की Bhagavatam. कथा श्रवण करो listen to the Srimad Bhagavatam. जिस प्रकार In the way that धान समझते great paddy, rice, paddy, चावल को निकालने के लिए to take the rice out of the paddy, बार-बार again, it has to be beaten again and again. हम तब वो Then चावल के ऊपर जो that covering husk फूस रहता है छिलका रहता है
the skin वो on छिलका the rice अलग हो जाता है becomes और separated चावल बाहर है। and the rice comes out. उसी प्रकार In that same way, इस कलियुग में in the Kali Yuga, भागवत Srimad कथा Bhagavatam's recital, पुनः श्रवण करें। one should listen to again and again. जितने बार श्रवण करते हैं As many times you नई नई listen, रूप में आपके you will manifest in new and new forms चित्त में सब प्रकाशित है। and will illuminate the heart. इसलिए स्वयं भगवान And तमादि the देव Lord Himself करुणा is saying, स्वयं भगवान करुणा करके sorry, स्वयं आदिदेव the Lord mercifully, अनादि Krishna, आदि गोविंद the cause of all causes, सर्व कारणम the original Supreme Personality of Godhead, ईश्वर परम कृष्ण Krishna, Sachidananda Vigraha, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण अनादि पुरुष गोविंद Govinda, the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, और सच्चित आनंदमय पुरुष and its embodiment of truth, eternality, and happiness. कृष्ण स्वयं That Krishna manifest for the benefit of the living entities in the form of the Srimad Bhagavatam. भगवान The Lord, जीवों के मित्र के रूप में प्रकट as the friend of the living entities, manifest. भगवान कोई बराबर नहीं है There is no one equal to the Lord. समान कोई नहीं क्योंकि समान के साथ समान वस्तु के साथ मित्रता That you can only have friends with somebody if they're on equal level. विभो होते हुए But the Lord being so great, He makes friends with the living entities. इस जगत में देखा जाता है We see in this world, पंडित व्यक्ति कभी मूर्ख के साथ संबंध करना नहीं a foolish person doesn't want to associate with a foolish person. कभी A rich person does not want to associate with a poor person. मित्रता करना नहीं चाहते चाहते हैं No, they do not want. A person does not want to make friends with दरिद्र के साथ मित्रता somebody who is करना poor if they are rich. धन दें If they do, they will ask for मांगना wealth. ही स्वभाव बन जाए इसलिए धनी किसके साथ मित्रता करते So हैं a wealthy person makes friends with who? धनी के साथ Another wealthy person. वादे से This धनी is true. व्यक्ति धनी के साथ मित्रता करते हैं किंतु स्वयं But भगवान the Supreme Personality of Godhead, in His He's manifest जिसकी बराबर कोई नहीं है जिसकी in समान तो बहुत दूर की बात a very compassionate form, अधिक तो बहुत बार की दूर है तथापि because there's भगवान nobody की equal to कल्याण him. के लिए देखो He comes down to the level of the living entities and becomes their friend. दरिद्र के साथ भी मित्रता कर He रहे makes friends with the poor, मूर्ख के साथ भी with the foolish. Mitrata. मित्रता कर रहे इसी कहते हैं भगवान के And भगवत this is the Lord's magnanimity, जिसे तमाम His देव supremacy. करुणा निदानम कमाल वर्णम कमाल वर्ण स्वरूप He's the और form अवतारम of this Tamal. माने स्वीत मित्र के अवतार के रूप में है। He सत्य comes शांति as the friend of the living entity, दीन दरिद्र with the poor, ऊंची नीच fallen, सबके साथ ही high and low. He becomes a friend. विदुर के घर में गए The Lord went to the house of Vidur, और विदुर के घर में जाकर and के there He उनकी घर से he took not the banana, but the skin of the banana. कृष्ण दुर्योधन की सोने के थाली में He could not take he did not take the preparations from Duryodhana विदुर के offered to him on a golden plate. और जिस समय विदुर जी घर में At that time, Vidur was not at और home. उस समय विदुर के पत्नी Vidur's wife, Vidurani, देखो भगवान आए हैं इतने It's, भाव में the Lord डूबे, has come. She was so absorbed and could not think, what should I offer him? वो भी There was the kela, the dry banana almost. उस केला को छिलका को She took the skin, और हटा करके केला को फेंकने लगे और it threw छिलका the को banana away, and they offered the skin, भाव में डूब गए। absorbed in और स्वयं her भगवान उस छिलका को love and devotion. छिलका है ना The Lord, उसको खाने लगे। He took the इतने समय skin विदुर जी आए at that time, and Vidur returned, and
बोले अरे क्या I कर रही हो? said, "Oh, भगवान what are you कहते doing?" हैं, "विदुर, Bhagavan Lord said, मैं ना केला खा "Vidur, रहा हूँ, I'm ना not चिप्स खा रहा हूँ। taking this banana मैं or क्या the खा रहा skin. हूँ? What am I eating? और This बोले, love." "भगवान Hari लाल Lal ki jai. देखो Just see, संग भगवान रामचंद्र किसके Lord साथ Ramchandra made friends with Vibhishan, वो अब चंडाल के साथ with the Goa Chandal, the low caste. He made friends संग भगवान कृष्ण with Krishna. ऐसे ऐसे सुंदर आदि लीला करते हैं क्या He made रामलीला perform such wonderful pastime in Ram and संग Krishna's भगवान pastime, रामचंद्र in Lord Ramchandra's pastime. और उनकी कुटिया में पता Hut. Nay, no, सबरी के कुटिया Sabri. में पता He came to Sabri's hut और देखो and सबरी के दिए हुए took the berries फल को ग्रहण करने and fruits she offered. ये भावना दिखाते This is the mood. The Janardana. हैं स्वीता अवतार सबके साथ कैसे मित्रता आदि करते हैं How he makes friends with all the living entities. और वही गुण कोई भक्त में हो If you have तो that भक्त quality, सबके साथ मित्रता करे he makes friends with everyone. ऊंची नीची High or low, पंडित learned or दरिद्र fallen, ये foolish. जात नहीं रखते। It is not considered. इसलिए चैतन्य For महाप्रभु this reason, Chaitanya Mahaprabhu, सभी के निकट गए he went to सभी everyone को प्रेम प्रदान and gave love and affection to all, who gave this transcendental love to all. इसलिए करें तमादि एवं करुणा निधानम For this reason, he said in this अवतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भगवत स्वरूपम Rupam, इस संसार भी in this समुद्र के पार करने ocean की of संभावना material existence, it's not possible to क्योंकि cross over संसार भी समुद्र में because काम क्रोध there रूपी is lust, घड़ियों की anger, this great creature, मगरमच्छ sharks, fish bigger than whales, fish that eat whales, Timingala fish, is not able to defeat such creatures, great riches, Vishwamitra and others. They cannot conquer over lust. What chance is there of the ordinary living entities? They cannot be freed from this false pride, prestige, ego. It's not possible. संसार दुख जलधि उपदितस्य काम प्रदादि न क्रम करी कवलिकटास्य दुर्वासन निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमो देहि पदारम बलम संसार दुख जलधि In this ocean of material suffering, ocean, संसार दुख जलधि उपदितस्य काम kama, प्रदादि body, with full of lust, anger, मैं संसार भी समुद्र में पड़ा इसे काम क्रोध आदि and लाभ other प्रतिष्ठा आदि name, fame, reputation, they're like sharks that are attacking me. इससे उद्धार होने की उपाय क्या है What is the solution for this? There's only one solution. सचिनंदन गौर Take shelter of Sachinandan Gaurhari. एक बार कोई Just सचिनंदन one गौर के नाम ले लिया takes the name of Shri Ki Jai. हेलो गौरा गौरा Gaura 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 अरे गौरा 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 रक्षमम अरे गौरा 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 पाईमा हेलो भाजा गौरंगा जापा गौरंगा ओ नहा गौरंगे ओ नहागे गौरा 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 रक्षमम
गौरा 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 साई नाम गौरा 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 साई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल वही कृष्ण In this Kali Yuga, that same Krishna, taking the mood of Srimati Radhika and the complexion, came as Gauranga. इसलिए उनके नाम है Gaura. क्या बोला? His name is Gaura. जोर से बोलो Gaura. गोरा गाय गोरा चांद Madhur Sware. गोरा वो बने गोविंद Go means Govinda. राम बने Radha. तो राधा और गोविंद Govinda. Radha and मिलित Govinda रूप में होकर के combined together make Gauranga. He came as इसलिए कलयुग में Gauranga. हमारे आराध्य देव Who is the worshipful deity in the Kali Yuga? Satchinandan Gaurahi. आगे एकादश स्कंद में जाकर In the के 11th canto, we पुष्टिकरण करें। will be clarified this. इस कलयुग में हमारे In this आराध्य Kali देव कौन है? Yuga, who is our worshipable deity? Brajesh Tanayas. धाम वृंदावन ब्रह्मा काचिद्वतां मधुसूदनेन यकल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणबल प्रेम वार्तमः श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमदं तत्रागुरुन् परः आराध्य भगवान ब्रजेश विश्वनाथ चक्रवर्ती Vishwanath Chakravarti Thakur is describing this supreme worshipable deities, that supreme Brajendra Nandan Shamsundar. धाम That वृंदावन is the holy abode of Vrindavan. ब्रह्मा काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण कल्पिता वो कृष्ण That Krishna, कैसे उपासित होते हैं how is he situated ब्रजवधू वर्गेण कल्पिता with the gopis, Vrajavadhu? They will praise Thalvi Sigamana Smarami Govinda Dev, divine abode of Vrindavan, transcendental on that throne, transcendental throne on the bank of the Jamuna, under the Kadamba tree. Seated on the jewel throne, Priya, with his beloved Sakhis, were ready to serve him. And that same Srimati Radhika had come in the form of Gauranga. Shri Radha Prithali Sevyamano Smarami. And this very beautiful in the Kali Yuga, worshipful deity is Sri Satchinandan Gauranga. And by which mantra will he be worshipped? Krishna Parshadam Jai Sankirtanam Prari Jaganti Sumedasham. Very intelligent persons. Sumedasham. They will. Krishna Varnada Ratati Jasati Krishna Varnam. Kri or Krishna. Krishna. These syllables. Two syllables. Krishna Varnam. Tisa Akrishna. That who is not किस वर्ण के रूप में आए हैं? blackish गौर वर्ण had come as a golden. कृष्ण के वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण. Krishna is dark, but that same Krishna, taking the complexion of Srimati Radhika and come as in a golden form. He come with his associates, Advaita Acharya, Nityanabhu, Sadashiv, Mahavishnu, Vishnu,
Nityananda Prabhu, as Nityananda Prabhu, उपांग Upa Anga, और उपांग से श्रीवास ठाकुर Shivash Thakur, and others. और उनके And नित्य जो है पार्षद संत गदाधर पंडित Gadadhar Pandit, श्रीमती राधिका Srimati Radhika. कृष्ण अकेले नहीं आते Krishna doesn't come on his own. When he comes, Srimati Radhika also comes in Kali Yuga. स्वयं श्रीमती राधिका Srimati गदाधर Radhika पंडित के came रूप में ही आई। in the form of Shri और Gadadhar राधा Pandit. जी जब आई हैं When she गदाधर comes पंडित के रूप में, as the form of राधा Gadadhar, जी अकेली नहीं and she doesn't come उसको alone. साथ में लेकर के आए। Sab Sakhya or Manju comes with Lalita, Vishaka, Astash, सर्व दामोदर Sarup Damodar, Rai Ramani, Rupa Manchi, Rupa Goswami Pad, संग पंग वस्त्र और Pash, अस्त्र Astra. What is भगवान the आते हैं weapon of the अस्त्र के साथ उनका अस्त्र that he क्या brings in Kali Yuga? हरिनाम Namastra, हरिनाम Namastra, हरिनाम Astra, अस्त्र लेकर in the form of Harinam. संग अस्त्र पार्षद जग्गई संकीर्तन और कौन सा जग्ग And कलयुग which में Yagya? नाम संकीर्तन Nam Sankirtan. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नाम संकीर्तन रूपी जग्ग In the form of Nam Sankirtan Yagya. श्रीमद् भागवतम नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्रकटित हुई। The Srimad Bhagavatam is manifest from Nam Sankirtan. श्रीमद् भागवतम And Srimad Bhagavatam, मध्यस्थल in में the नाम middle, संकीर्तन की महिमा बताया। it shows glories of Nam Sankirtan. स्कंद में प्रथम From the अध्याय में first प्रथम canto, श्लोक first chapter, first नाम verse, संकीर्तन की महिमा Nam Sankirtan has been glorified. परम Satyam Param Dhimahi. सत्यम परम धीमहि Satyam, सत्य स्वरूप से भगवान the श्रीमद् भागवत में personification और of कुछ truth. देव देवी की In Srimad Bhagavatam, the demigods, the demigoddesses have not been आदि ग्रंथों में glorified. प्रकट करने के पाए गए And Shri Vyasadeva, दूर करने के लिए to take away कई all गणेश की obstacles. वंदना की, In other Puranas, he's glorified Ganesh. शिव जी के वंदना की, Sometimes he's दुर्गा glorified आदि Shiv, देवी की Durga, वंदना की, other देवी Devis, देव देवता की वंदना other की। demigoddesses. सत्य में लिखा है। In the Shastras, it is said, किंतु written, श्रीमद् भागवतम that in the Srimad Bhagavatam, there is no glorification of the demigods, the demigoddesses. के लिए The removal of obstacles in the Mangalacharan, auspicious invocation. ये मंगलाचरण जो है This, तीन प्रकार की there's होते हैं। three types of एक Mangalacharan. है Namaskar, नमस्कार, Namaskar, Namaskar. नमस्कार, First is प्रणाम Namaskar, Pranam. और वस्तु Vastu निर्देश Nidesh, Vastu Nidesh, और तीसरी Ashirvad, Ashirvad, blessings. मंगलाचरण से And this मंगलाचरण Mangalacharan is auspicious, किंतु auspicious श्रीमद् invocation. But in the Srimad Bhagavatam, स्पष्टीकरण का is very clearly कोई देव देवी के stated आराधना नहीं, there is no ना विघ्ननाश दूर करने के लिए glorification of गणेश जी की demigods आराधना। or demigoddesses like Ganesh. You see, इसलिए श्रीमद् for भागवत this की विशेष reason, Srimad Bhagavatam, this is the speciality. सत्यम परम Dhimahi, कोई सत्य स्वरूप that भगवान को मैं ध्यान कर I meditate on that Supreme Personality of Godhead, the personification of truth, सब प्रकट होते हैं from whom everything is manifest, from whom everything is maintained, and in the end, from whom everything is destroyed by his desire. अच्छा सृष्टि स्थिति Pralay, प्रलय सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा एका Eka, स्वयं भगवान the Supreme Personality of Godhead Himself, उनकी Krishna, सृष्टि by his desire, creation, by his desire, maintenance, by his desire, सुधार destruction. तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण तब इच्छा मत
Brahma By his desire, Brahma creates. By his desire, according to desire of of Lord, Lord, Brahma ji. and Brahmaji He creates creates this your nature. world. तभी और उनकी इच्छा के अनुसार His स्वयं भगवान partial विष्णु incarnation. जीवों के पालन को He संभालते हैं। maintains the living entities. और उनकी इच्छा के And by his अनुसार desire, शिव जी महाराज Shivji Maharaj, Sadashiv, हंसादि का he destroys सृष्टि स्थिति प्रलय the साधन sadhana शक्ति sakti rekha. इसलिए स्वयं भगवान वर्णन संस्कृति That's के for पर this reason, the वर्णन Supreme किया है। Personality of Godhead, जन्म Sham Chandra, has been described in this first verse. अर्थेश अभिज्ञ सराट तेने ब्रह्म यदा आदि ज आदि कवे मुज्जन्ति जत सुराय तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो अमृषा धम्ना सेन सदा नित्यं Vakam सत्यं Param Dhimahi. इतनी सुंदर Such beautiful व्यासदेव जी Vyasadeva. मंगलाचरण In this auspicious invocation is describing. अनेक प्रकार जो है एक्सप्लेनेशन And there are many explanations of this सत्य विचार और through philosophical conclusion and through the सृष्टि relish of mellows, sweet mellows. इसका जन्म जन्माद जन्म Adi आदि Asya. Janma Adi Asya. जो कुछ भी सृष्टि के कारण कौन है Who is the cause of all causes? The Supreme Personality of उनकी Godhead. इच्छा बिना एक Without his सा भी desire, not even a leaf moves. उनकी इच्छा आप लोग यहाँ पर बैठे हुए And now you're sitting here. खड़े हो जाइए If you खड़े stand हो up, पाएंगे will you be able to stand भगवान up? की इच्छा नहीं हो If the Lord does not desire, बिल्कुल but you will not be able to भगवान की stand. इच्छा नहीं हो If the Lord does not desire, you will not आप be able लोग to sit खड़े here. किसकी इच्छा से आए हैं? Bhagwan ki ichha se. बोलो अपनी इच्छा से आए Have हैं? you come with your own desire? Bhagwan No, ki because the desire of the Lord. इसकी जो समझ लेते हैं The one who उसी की कहा understands जाता है, this, सुमेधस who is he's known as Sumedasha, very intelligent Pandit. भगवान की इच्छा से हम सब जीवित है By the Lord's desire, we are alive. थोड़ी सी भूचाल हो जाए If there's some earthquake, a little bit, देखने के दो दिन you will, within a second, we will be crushed in seconds. कुछ साल के पहले ही Just some years ago in Bhuj, so many people were killed in the earthquake. Haji, ये किसकी इच्छा उनकी by इच्छा the desire of the Lord. उनकी इच्छा भी इसके By his desire, destruction takes place. सब उनकी इच्छा इसके जो Everything समझ is लेते हैं, desire. One who understands उन्हीं this संसार से मुक्त होकर के is able to cross over this ocean of नाम material की existence. सुख, नाम की No बुराई में experience of happiness or distress in their heart. दुखेश अनुद्विग्नमना Sukheshu Yayadvita Spriyaha Taraga Bhaya Krodha Tati Nirochate. This is the definition of Muni. One who is a Muni. He's not happy in happiness, he's not unhappy in distress. He's recognizing that everything is going on by the will of the Lord. The Jiva continues his work according to his fruitive activities. Who creates? The Supreme Personality of Godhead creates. Because we glorify creation, but who glorifies destruction? Why has this word destruction been used? I'll tell you one very wonderful thing. There was one king. He had called two gardeners. He said to the two gardeners, and he called two gardeners. One he told, I gave you 25 acres of land, and I've given you 2,500,000
rupees पैसा नहीं है। and अच्छा, ये सुंदर also मेरे लिए and then नंबर एक, make one very beautiful garland for me, garden for me. माली को 25,000 And so रुपए each दिए थे, 50,000 gardener was रुपए given दिया, और these 25 बीघा 25,000 rupees and 25 acres of land. और दोनों माली जो सुंदर रूप में In this way, the gardeners created a garden. पहली बार ये मत The first gardener माली जो है सुंदर रूप में created a very beautiful garden पेड़ को जो है पौधा को जो है and planted trees है, पानी भी दिया, and gave water. दोनों ही जो है पौधा लगाया, पानी दिया, सब कुछ। Everyone gave water. 5 Both साल gardeners के gave बाद राजा water to कहने their लगे, land. After 5 years, the मैं king तुम लोग के said, बगीचा में देखना I want to चाहता come हूँ। and see कैसे what you have created. बगीचा बनाया? जो मैंने जो पैसा दिया, The जमीन money दिया, I've given you, the land और I've given उसमें you, what have you achieved? What have you done? सब कुछ खाद आदि तो कुछ डालना, सब What and gave everything इसलिए needed राजा कहने लगे, मैं for that देखना land. चाहता हूँ। So I want to see, the king said, what kind of a garden you have created महाराज अपने पार्षद मंत्री आदि के साथ with his ministers and his entourage. पहली माली के पास आए Came to the first gardener. और देखा वो And बगीचा saw बहुत सुंदर था। the garden was very beautiful. आप इधर से देखे तो If कोने you तक, see, पीछे तक from here to the end, you could see इतनी सुंदर very beautifully सीधी करके straight पेड़ lines लगाया, were अनेक प्रकार के planted, trees, फलदार के वृक्ष आदि, flower आम भी bearing, लगाया, fruit bearing trees, आम के just पेड़ like लगाया, here we जामुन have के पेड़ put लगाया, mango trees, सबकी अलग-अलग sitafal trees, है। custard बहुत apple, सुंदर वो बगीचा था। very फूलों beautiful की बगीचा भी लगाया, garden created. अनेक प्रकार के पुष्प आदि Innumerable फूल, types of flowers were, आ रहे थे, and very beautiful fragrance was coming, जिसमें मानो कोयल कुहक रहे like थे। the cuckoos were singing. इस बगीचा में कोयल And the cuckoos were singing. मयूर नृत्य कर रहे थे। The peacocks were dancing. फलदान वृक्ष जो है, सब फल पके हुए हैं। All the fruits were ripened and sweet fragrance was coming. राजा महाराज The king, उस बगीचा को देख करके seeing the garden, was very pleased प्रशंसा करने लगे। and glorified the कि मेरा garden. जमीन देना और मेरा And धन देना my investment in this person, in this wealth, in this land, अच्छा। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। Maharaj was और very प्रसन्न happy. होकर के महाराज पहले मालिक को और भी धन दे दिया। And gave more wealth to that first gardener and extend this garden of yours. अभी दूसरे मालिक के पास But गए, then he went to the second gardener उनके बोले महाराज बोले and said, तुमको जो मैंने पैसा दिया, I जमीन gave you दिया, this money, the land. वो बगीचे के दिखाओ, Where is that? क्या किया तुमने? What have you done बोले, with महाराज it? And the gardener said, मैं भी Look, पौधा लगाया, O king, मैं I भी also आम के पेड़ planted लगाया, मैं this भी mango जामुन के पेड़ tree, लगाया, फूलों के this पेड़, सब कुछ flowers I also planted. आइए महाराज दर्शन करें। Come and see. महाराज उस बगीचे में प्रवेश कर नहीं The पाए। king could not enter the garden. Why? Because इतने बड़े बड़े डाल हो गए, there were शाखाएं great हो गए, branches, शाखाएं हो गए, कांटे nettles. हो गए, एक भी डाल कटे भी नहीं है। He did not cut any branch. पानी तो दिया, He gave water, खाद भी दिया, gave manure, fertilizer. किंतु But उस बगीचे को देख करके seeing that garden, मूर्ख, oh foolish person, oh foolish, तुमने बगीचा बनाया कि you made this जंगल बनाया? garden, or you made a jungle. जंगल You बनाया। made a jungle. And Maharaj तो मेरा said, तो माली कहने लगे, पहली जो माली जैसे just like the first gardener, पौधा के जैसे he planted the seeds. मैं वही किया, I did the उसी same. प्रकार मैं हर रोज पानी भी डाला, But I खाद भी also gave the fertilizer and water, डाला, सब कुछ किया। did everything the same. बोले मेरा बोले राजा What is बोले, my fault? तुम्हारी एक ही But कमी है। there was one fault. इसे The king बगीचा said, नहीं बना करके क्या बनाया? You've not made a garden, you made a jungle. हैं? बोले कैसे? How? बोले जो डाल पड़ गई These branches, उसको उन्होंने you didn't trim the trees.
बोले बगीचा कैसे बनाना चाहिए? How should you make a garden? माली क्या करते हैं? The gardener उसकी is expert दाल बढ़ जाता है, that उसको those क्या करना branches he needs to trim. काटना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ अरे जी। जोर से तो बोलो। हाँ जी। हैं? हाँ जी, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी, बोलते। हाँ जी. हैं? उसके चारों तरफ घेर घेर के And काटना चाहिए। then भाई it पशु should पक्षी be fenced नष्ट ना कर दे। that animals केवल cannot पानी come. तो दिया, He gave water खाद भी डाला, and fertilizer, किंतु but उसको काटे। he did not trim the trees, the इसमें weeds. जंगल हो गए। So जंगल में आप the एक weeds turned बगीचा into जंगल में jungle. इतना ही अंतर है। That's the difference क्या बोला? between a jungle and a बगीचा garden. और जंगल में इतना ही अंतर है। पेड़ ही ऐसा Well, कोई the same trees are there, किंतु बगीचा में but in the दाल garden, आदि जो है वो मालिक the gardener trims. काट करके रखते हैं। जितने And जरूरत है what is needed is उस दाल kept, को रखते हैं, and और what जो is not needed, दाल आदि पौधा आदि जरूरत नहीं है that's उसको which is not needed, the काट weeds, करके, they're all taken out, जैसे प्लॉट पड़ा हुआ है, just like this बबुल के plot. पेड़ हो गए। These यदि plots आप are नहीं standing काटेंगे, क्या alone, हो जाएगा? standing bare. If you और don't दूसरी take care of them, only nettle काटना bushes चाहिए, grow there. काटना चाहिए। They need to be अब cut. अवांछित वृक्ष के काटना चाहिए। Unwanted जो वृक्ष की जरूरत नहीं है। trees or branches. क्योंकि आप पानी जब देते Or रहोगे, if you carry on giving water फूलों के पौधों के साथ ही साथ वहीं with जो है flowers, शाखा you will आ जाए। get unwanted branches. उसको क्या करना चाहिए? What should you do? They should be cut. तात्पर्य क्या है? Meaning, भगवान ये सृष्टि आदि किया, the Lord has created this और creation, साथ सृष्टि के and साथ ही along with साथ that, भगवान ने He has संहार भी शब्द रखा He है। is this हैं? word of protection, पृथ्वी के लिए इसलिए balanced उसी के in लिए equilibrium. भगवान So the Lord, सृष्टि और along with संहार creation, प्रलय like भी रखा। He gave at this destruction also. वृद्ध हो गए, शरीर वृद्ध हो गया, When the आत्मा का body शरीर becomes बुढ़े नहीं होते। old, the Atma is not old, it never grows आज old. से 50 साल पहले जैसी 50 years आत्मा थी, before, वही भी आत्मा वही है। That same Atma you have, चिरंतन आत्मा नवयौवन होती रहती है। the Atma is ever new बुरा नहीं होता, वृद्ध नहीं and होता। fresh, never old. शरीर क्या हो जाता And है? this body becomes old. और इसलिए भगवान And इसी प्रकार ये The विधान भी Lord दिया। has made this arrangement that this old body will diminish and deteriorate and die, destroy. हम इस संसार में What is कोई good? जब मर That जाता है, लोग दुखित होता है। when the old person in this world becomes old and dies, people become upset. We should not be sad. The Lord says in Bhagavad Gita, in this shloka, जैसे वस्त्र फट जाने पर just like old cloth when it becomes नया वस्त्र धारण करते हैं, old and और पुराने torn, वस्त्र then we throw that उसी old प्रकार cloth ये and take शरीर new जो cloth. दुष्ट हो जाता In है, the same way, when the शरीर body के becomes जितने old अंग आदि and all its limbs काम become, करना बंद कर देते हैं। the limbs do not work as before, शरीर रूपी वस्त्र then को त्याग दे दो। then that body is renounced and a new body is जब हम लोग acquired. नया शरीर लेने की- An intelligent person will take on a new body or not, वाह, will take it willingly, happily. What is need of this old body? इसलिए संहार आदि के शब्द रखा This गया। sanghar, this इस protection, उदाहरण के maintenance, द्वारा समझना चाहिए and destruction. कि भगवान सृष्टिकर्ता भी है, The Lord is also the creator and the destroyer. ये तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन So in this लिखा shloka, it is said, है। जरूर। और स्वयं भगवान and the विष्णु Lord Vishnu, जीवों के पालन पोषण भी करते। He maintains the living entities. हम मातृगर्भ में जब When we're in the womb of the mother, पालन पोषण करते हैं, who nourishes us? भगवान The Lord. He माँ के nourishes गर्भ us. से बाहर आ जाते हैं। When we come out from the womb of the माँ के mother, स्तनपान करते हैं, दूध when we कहाँ से आ drink जाता है? the breast milk of the mother, where does that milk come from? भगवान भी। The Lord sends this milk. इसलिए कहते हैं Twamev तमेव माता mata cha pita twamev pita twamev bandhu sakhas cha twamev twamev vidya
Tameva Vidyas Trinam Vidya Trinam Tameva Vadeva Sarva Deva Devam. Yeah, the course, 4 courses. Knowledge. You are all everything. Who is our mother? Who is our father? You are a friend. You are everything. One who understands this, then there is no unhappiness or distress. Shrita Spriya Raga Bhaya Krodha Muni Uchyate. In the Srimad Bhagavatam, this teaching is there. Gita and Bhagavad, Mahabharata and others, the same teachings are there, that I am not this body. Who am I? I am the spirit soul. Jiva Bhuta Sanatana. Bhagavad Gita, the Lord says, I am the spirit soul. When we understand this, then there is no happiness or distress for that person. It's equiposed in both. Janma Adi Asya. Adi means creation, maintenance, or in other words, where all the rasas come from Adi Ras. Adi Ras is known as Shringaha Ras. Adi Ras. There are 5 mellows, primary mellows, and 7 secondary rasas are there. Which 5 particularly the primary rasas. Shanta Das, Sakha, Vatsalya, Madhurya, neutral, servitude, and 7 secondary, Hasya, Karuna, Vibhatsa, laughing, hasya, like this. These are secondary rasas. Where are they all coming from? The Supreme Personality is the embodiment of all mellows. And he relishes these mellows himself. And he also allows the devotees to taste these mellows. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's raised one hand, and the other second hand is pointing downwards. He's tasting that transcendental loving mellow, taking that complexion of Srimati Radhika, and her mood is tasting, and so sweet. And he's also distributing that karuna avatinna kalau samarpayatu unnatam janasam samapti sriyam paripurna sundar didikadva sada hidaya kamdare pratubha Sachinandan Gaura, he is giving this transcendental love and affection of the divine couple. The main rasa, the original ras is Shringar Ras, and from that all the other ras is manifested in this way that from the ocean, all the ocean, the rivers are manifest, and in all the rivers they also go back into the ocean. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu, the embodiment of sweet mellows, he chased this Shringar Ras and he gives to the living entities. The Supreme Personality of Godhead, He is the origin of this ras. And He distributes in the form of Narayan.
he gave to in the heart of Brahma, जो आदि कवि कवि। आदि कवि ब्रह्मा the Adi Kavi, the original poet. He manifests in the heart of Brahma. आदि कवि कौन है? Who is that? Adi Kavi. In our tradition, Rupa Goswami is the original original poet in the heart of Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu. Krishna himself, he manifests in the heart of Sri Rupa Goswami. And seeing these pastimes of the Lord, Brahma and other demigods became astonished. Krishna's sweet pastimes, Brahma even became bewildered, illusioned. Seeing Krishna's pastimes, could not understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, or he's an ordinary cowherd boy. In the pastime of Brahma, this pastimes, beautiful, even Baladev Prabhu, he could not understand. Lord Ramchandra, Lakshman could not understand Lord Ramchandra's pastimes. In the pastimes of Sita's testing of Sita Devi's chastity, Lakshman could not understand. Ramchandra said, I want to get my original Sita back. So Lakshman said, is this a false Sita? After killing of Ravan, Vibhishan became the king of Lanka, and Vibhishan freed Sita and sent her back to Lord Ramchandra. When Sita came to Lord Ramchandra, Ramchandra said, tell Sita to wait. Lakshman, what you need to do, you ignite a fire and ask Sita to test her. This is Mother Sita. How can she be unchaste? Who gave her whole life in the service of Lord Ramchandra. She did not think of even another man. Lakshman said, Sita is my mother. Lakshman became very upset. He is Bhagavad Tattva. Lakshman is also Baladev Prabhu. He is Guru Tattva. Lakshman said, what are you saying? Make a fire. Lakshman became very angry. Ramchandra said, Lakshman, I will tell you, I want to bring back my original Sita. Is this a false Sita? All these 1 year, 2 years we fought. We all sacrificed our life for this purpose. We killed so many demons and performed so many austerities. And now you're saying this Sita is not the original Sita? Is this a false Sita? Duplicate Sita? I'm not saying this is a false Sita. She is the shadow Sita. So where is the real Sita then? If this is the shadow. Even Lakshman could not understand. Even Akhanda Guru Tattva, Baladev Prabhu came in this is younger brother of Lord Ramchandra. How can we understand? Then the Lord said, meaning Lord Ramchandra said, O Lakshman, this Sita is Chaya Sita, shadow Sita. Then where is the original Sita? Then she will manifest from this fire. She went to Shiv Parvati in Kailash. This Chaya,
जब सीता when हरण के लिए Ravan और लक्ष्मण came to ने kidnap एक Sita, रेखा Lakshman खींच लिया। made कहा a जाता है, line लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। क्या called लक्ष्मण क्या रेखा? what line? Called Lakshman Rekha. मर्यादा रेखा भी कहा। This is called Maryada Rekha, the line रावण of ने भी एक शब्द etiquette. एक बार कोई स्त्री मर्यादा की When रेखा के any बाहर चले time जाए, a lady वो crosses that line of वापिस etiquette, नहीं आए। that she cannot return back. नहीं सुना। Do you रामायण में understand? देखो, In the Ramayana, it is जब shown सीता देवी when Sita Devi रावण की जब भिक्षा देने लगी, came to give alms to Ravan and crossed that line of protection, then Ravan caught her hand. बाहर जाने फिर पुनः अंदर जाने She की could चेष्टा not की। return रावण ने back एक बात कही थी, across the line. एक बार कोई स्त्री Once, anytime, any lady मर्यादा रूपी crosses रेखा के this बाहर आ line जाता of है, etiquette, अंदर जा नहीं सकता। they cannot return back again. Yeah. Clap. किंतु वास्तव रूप में वहीं पर But एक there is लीला one प्रकट कर दी। there is one pastime that's जब manifest from असली this. सीता When the original Sita, रावण की वो देने के लिए भिक्षा देने के लिए when she came और out वो to लक्ष्मण रेखा की give गोली the को alms तीर to में Ravan, सीता देवी at that point she entered the और line लोक में of भी fire. भिक्षा थी। और She, उसी by the लक्ष्मण arrange की of रेखा से Yogamaya, कौन बाहर आ गया? at that time Shadow Sita manifested and the original Sita जिसके returned रावण back, को भी पता returned नहीं है। to रावण सोच रहे हैं यही Kailash. Ravan thought that this is the तो original रावण के Sita. मुख से तो एक बात निकल गई अच्छी बात। This क्या निकला? came out of Ravan as कोई मर्यादा की रेखा के बाहर एक बार आ जाए, one who crosses that line of protection, etiquette, बहुत सुंदर कथा है कि and then they cannot return back again. ये लक्ष्मण रेखा क्या है? मर्यादा रेखा। This Lakshman Rekha is this line of etiquette. It's called also Guru Rekha, the line of Shiguru. If one crosses that line, then only distress and suffering is for them. One who leaves गुरुदेव के there, आदेश के उल्लंघन करके one who crosses over the instructions of Shiguru, भगवान की भजन भी करके and even if they worship the Supreme Lord, they will still have to go to hell. सही पापी है। In this verse, it is described like this. ये लक्ष्मण रेखा के अनेक अर्थ This बताए हैं। meaning of Lakshman Rekha, Guru Rekha, Maryada Rekha, वास्तव में नौ this original लक्ष्मण रेखा की उल्लंघन Sita, किया, didn't have crossed over this line, मर्यादा के उल्लंघन। and nor did she cross वो that असली line सीता of जो etiquette, रामचंद्र की जो that original जो हाथ Sita, में सीता जो है, that who married वो सीता Lord उन्हीं के Ramchandra, माध्यम से कहाँ that चली गई? through the fire कैलाश में, she went to Kailash पार्वती के साथ विराज and stayed with Parvati. आज यही तो And रामचंद्र this- का है। This मेरे is what असली Lord सीता को Ramchandra is वापस saying. ले लें। कैसे? I want to bring back my original Sita through the fire. प्रज्वलित करो, So light the और fire, ये जो सीता छाया सीता and that अग्नि के Chaya अंदर में Sita जाए, will और go असली सीता into the fire, वहाँ and the होगी। original Sita will come out. ऊपर से दिखा रहे हैं। Externally, ये it's showing वास्तव रूप में like a भगवान test, रामचंद्र but अपने जो it's not like this. स्वरूप शक्ति सीता मिल गई। Lord Ramchandra wanted his original Sarup लक्ष्मण की ये Shakti. पता नहीं था। Lakshman did not know this. इसलिए कहते हैं मध्यम की हम जो कर रहे हैं ब्रह्मादि बड़े Even देवता भी Brahma and great नबी हो demigods जाते हैं। like this, शायद him, लक्ष्मण ने कुछ have become पता नहीं किया। illusioned. बलदेव प्रभु के लीला भी Lakshmi did not know. एक Even साल हो गया Baladev, जो also बलदेव for 1 और year, ठाकुर ब्रह्मादि when चुरा करके Baladev, रखा था। no, when Brahma took the calves and और cowherd बलदेव boys, प्रभु एक दिन then कृष्ण after के some साथ time, गोचारण करते देखा, Baladev ऊपर Prabhu में जो was गाय जो है, seeing the cows. नए बछड़े के छोड़ करके पुराने They were leaving बछड़े की तरफ they were leaving the newborn calves and going to the old calves, उसकी तरफ 1-year-old calves. बलदेव प्रभु But Baladev is thinking, how is this possible? Then Baladev in his meditation and thought, oh Kanaya, you were not satisfied by drinking the milk of one mother. You became all these calves. You cannot be satisfied by drinking the milk from Mother Yashoda's breast. You became the sakhas. You see, then Prabhupada thought
this, एक साल तक for बलदेव 1 year, प्रभु भी- Baladev Prabhu was also in bewilderment. बलदेव प्रभु हमें न- कृष्ण Also, को Krishna, Baladev is not different from Krishna, but the arrangement of Yogamaya. जब सूर्यो- So it's said in this verse, what to say of Brahma, Lord Shiva. ऐसे ऐसे सुंदर This is लीलाएं the जो है, beautiful pastimes of the Lord. मुझंती जब सूर्यो, तेजो बारी मृदंग, Tejovari कृष्ण के Mridam. पंक्तित ध्वनि सुन करके He listening to the sound of Krishna's flute, everyone becomes bewildered. सब क्या पिघल जाता है, Rocks जल स्थिर melt, हो जाता है, water stands still आगे नहीं बढ़ता है। and does not move forward. पावर जंगम बन जाता है, Things that जंगम are moving become still, and those that still become moving. The moon, चंद्रमा भी listening to the sound of Krishna's flute, अधिक परिवर्तन कारण and the moon becomes still. हम लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा When we करते go हैं, to Giriraj Parikrama, वासंती राज की कथा Iti स्मरण करते हैं। Vasantik Ras, कृष्ण के विनुत ध्वनि सुन करके listening to the sound of Krishna's flute, the moon stopped moving. देखो, See, तेजो बारी मृदंग Tejovari Mridam. सभी नक्तस्तथा तुद्बोधात् मुकुंद गीतम, कृष्ण के विनुत ध्वनि सुन करके Listening to the sound of Krishna's यमुना flute, की जल, मानसी गंगा की जल, the waters of आगे नहीं जा, Ganga, the waters of Manasi Ganga became still. और उसमें आगे नहीं जाते, जल एकत्रित होते, जल में क्या होता है, The water being still घूर्णावट forms a whirlpool. देखो, जल में आगे नहीं जाते, The water does not move forward in the transcendental world. सब विपरीत अवस्था हो जाती है। Everything becomes perverted. इसे तेजो बारी Mritam, मिट्टी आती है, देख, पत्थर just like stone melts. जथामिव त्रिसर्ग अमृषाधम नासेन नृत्य कुवकं सत्यं परम परम धीमहि। धीमहि. और भगवान ऐसे And the ऐसे Lord सुंदर मधुर लीला आदि करते रहते हैं Performs his sweet pastimes. और स्वतंत्र सच्चमय पुरुष स्वयं The भगवान supreme independent personality of Godhead, स्वरूप शक्ति के साथ with ही his Swarup Shakti, internal potency, performs pastimes. अपने स्वरूप शक्ति सर्वरी राधा आदि And Srimati Radhika, with the gopis, he performs pastimes. जब पाद पंकज पलाश विलास Rasa भक्ता, Bhakta, जिनकी चरण कमल की स्मरण करके बड़े बड़े देवता लोग remembering the lotus जिनके feet, आदि के जय कीर्तन करते हैं। they can conquer भगवान the कैसी सुंदर सुंदर Indra. इसे सत्यं परम धीमहि, pastimes of the Lord are so sweet. कौन है? स्वयं भगवान। And that supreme personality of Godhead, the personification of truth. गायत्री मंत्र I में meditated on that personality in the Gayatri Mantra, Prachodayat. वही स्वयं स्वरूप स्वयं भगवान And that supreme personality of Godhead, स्वरूप the embodiment of truth personified. विश्राम मिश्र करेंगे श्रीमद् That भागवत Shri Srimad Bhagavatam, नाम संकीर्तन के द्वारा ही by the Nam Sankirtan, is manifested षष्ठ स्कंध में in the sixth canto, in the middle canto, उसमें अजामिल के पक्खन in के the द्वारा pastimes of नाम Ajamil, संकीर्तन की ही महिमा through the glories of Nam Sankirtan और श्रीमद् भागवतम and Srimad Bhagavatam. एकादश के In द्वादश the स्कंध में 12th canto, अंतिम श्लोक में in the last क्या कहा shloka, है? also what is said, नाम Sankirtanam संकीर्तनम Tasya Sarvapapapanat रामोत्कं समनन्तं नमामि हरिपरा। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप this verse, नाश। Janam. अरे नाम संकीर्तन And के through द्वारा ही Nam Sankirtan, all the sinful reactions are destroyed. Nothing else to do. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रणाम दुख समनम, और एक बार कोई प्रभु के नाम One लेकर के who प्रणाम takes करे, the names Lord just once, holding their palms together. Everyone fold your arm. हाथ जोड़ करके एक बार प्रणाम करने के When बाद you offers pranam to the Lord,
he doesn't have to return back to Tadasamedi material world. punaroti jananam Krishna pranamino na punarbhavayo Dasasamedi punaroti jananam. In this verse, 10 बार one who अश्वमेध यज्ञ करने performs a whole sacrifice 10 times, they still have to return into this material world. कृष्ण प्रणामेनो एक बार But one who offers just once pranam to Krishna with folded arms, कैसे प्रणाम करनी चाहिए? how? प्रणाम बस कृष्ण रूप में नमदार है Offering oneself just once, one doesn't have to return into the womb of a mother. This is the glories of chanting the holy names. So in the middle, in the beginning, middle and end, सर्वत्र in this verse, आदि beginning, in the beginning, मध्य in the middle, और अंत and क्या होनी the चाहिए? end, what should be there? Nama Sankirtan. Nothing else to do. किंतु श्रीमद् भागवत But भागवत की महिमा and the glories of Srimad Bhagavatam is recited in Padmapura. The greatest sinners बाबा की भागवत कथा श्रवण करके listens to Srimad Bhagavad Katha. भगवत धाम They attain the supreme abode of the Lord. फलश्रुति बता रही है In this, भागवत कथा की the फलश्रुति Falastuti, the Falastuti, भागवत कथा सुनने के लिए the what are the results of listening to Srimad Bhagavatam? Today's Ekadashi, प्रसाद मिल जाएगा you will get fal prasad, केला मिलेगी you will get banana, fruits, apples, you'll get क्या बनाया aloo sabji. आलू की सब्जी बता रहे Sabji. हैं फल मिलेगी पकोड़ा मिलेगा You may get some buckwheat flour pakoras. पर यही फल Something. भागवत कथा सुनने This is the result, fruit of listening to Srimad Bhagavatam. No, this is a prasad. It's nice, किंतु देखो but listen. भागवत कथा की फलश्रुति क्या What is the fruits of listening to the Srimad Bhagavatam? What will we get by listening? महा से महापापी भी Oh, the great sinners, they can attain the abode of the Lord and attain the divine transcendental love. I'm not taking much time. Today's I'm showing, telling of the glories of the Srimad Bhagavatam on the banks of the Tungabhadra river. There are many Brahmanas, Vaishyas, Shudras living in this area. And there was one exceptional, wealthy Brahmana. His name was Atmadev. He was so much wealth, unlimited wealth, but he was very miserly. He did not eat himself, nor did he feed others. His wife was very beautiful, and his wife's name was Dunduli. What was the name? Dunduli. Very nice name, as her qualities were. So it's a name, meaning that she was very quarrelsome. She liked to make quarrel between others. But Atmadev Brahman, when he reached his old age, and he thought to himself, I have so much wealth, who shall I leave? Will take in the form of taxes. What will my wealth be used for? What the Shastra scripture says, what should the wealth be used for? In the service of wealth, with so much endeavor. They will drink, engage in sense enjoyment, and they will have to go to hell, and so will you. We see this. This acquires so much wealth, but there's no use at all. Daughter goes one way, the son goes another way. They perform sinful activities, taking the father's wealth and ruining it, spoiling. What is the benefit of that? If you have wealth, engage in the
service of the Lord, make a beautiful temple. The big clap loudly. Yeah. जिससे अनेकों लोग हजार लोग आकर के But अपने लाभ thousands of people will take part. They will come to the temple, they will hear Harikatha, and they will benefit others. सत्प्रयोग होगा कि नहीं This will होगा? be the most beneficial use of wealth. Haji, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ये चिंतन करने the लगे, Atmadev मेरे पास Brahman, इतना he धन है, thought, ये धन किस I have काम so में? much wealth, what use will it be इसलिए when I उन्होंने die? विचार करने लगे कि And he इसको thought, संतान चाहिए। I इसलिए would उन्होंने need a दान son. दक्षिणा देना शुरू And किया। so he started to give फिर charity, वृद्धाल आ गए। but he's in old age. युवावस्था में इसने दान दक्षिणा दे If नहीं it, दिया, it didn't give in the वृद्धाल young, में थोड़ा दान दक्षिणा he देना। started to give wealth, some थोड़ा wealth, कंबल बांध दिया। distributed a few blankets. बांटते हैं, अभी ठंडी पड़ रही है Now ना। it's cold is coming, blankets in दिल्ली में, वृंदावन में लोग Mostly जाते हैं। Vrindavan. The दान people दक्षिणा give देते थे थोड़ा। blankets to some extent, किंतु उसमें भी दुरुपयोग हो जाता है। and even some fault is in this. बहुत घटना आ जाता है।